Hello everyone, welcome to this session. I am Sukhda Trivedi and I am going to discuss Unit 4 Assessment Method for all the NTET aspirant. This video lecture is completely dedicated to all NTET aspirants, those who are preparing for this upcoming exam. Now, this exam date has been actually extended. The registration for this exam has been extended till 24th of October. So if you have not registered yet, you can do your registration. One more thing, if you are preparing for this exam and you need a well structured preparation, so you can also join my course, that is NTET complete course, where I'm going to give you complete PDF notes, lectures that are unit wise, test series and MCQ discussion. So you can check out this course on my application that is available on Play Store. Okay, so link is in the description, and if you have any doubt related to this course, you can also ask your query directly on Instagram. From there you can also get my WhatsApp number. Okay, so you can make a search Sukhda Trivedi. Okay, so let's move ahead. Let's talk about what the assessment is actually. So when it comes the term assessment, it's very important for the students and for the teacher also. Okay, so we are going to study assessment by the different definition, so you can get the complete idea. आपको पूरा idea लग पाएगा कि actually में assessment होता क्या है, right? So very first thing I want to say that assessment is a integral part of the teaching learning process. Assessment is integral part of teaching learning process. Now what does it mean? It's integral part of teaching learning process. ओके, मतलब ये है कि अगर टीचिंग लर्निंग हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पर असेसमेंट भी हो रहा है और होगा ही, बिकॉज दिस असेसमेंट वर्क फॉर बोथ. असेसमेंट जो है वो टीचर के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक स्टूडेंट के लिए होता है. ओके, बट इट मे सीम्स वेरी न्यू फॉर यू, राइट? क्योंकि असेसमेंट हम क्या समझते हैं, जो हमारी एग्ज़ाम होती है, हमारा जो टेस्ट होता है, वही हमारे लिए असेसमेंट है, राइट? बट आफ्टर दिस सेशन आपका जो थिंकिंग है असेसमेंट के बारे में वो डेफिनेटली चेंज होगा. असेसमेंट क्या है एक्चुअली में ये आप समझ पाएंगे. सो लेट मी शो यू वन डेफिनेशन. सो हम क्या समझते हैं असेसमेंट से? सो यस, असेसमेंट इन एजुकेशन इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड एनालाइजिंग अ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिलीफ. किसी एक स्टूडेंट के नॉलेज, स्किल, उसके एटीट्यूड और बिलीव को एनालाइज करना एंड देन डॉक्यूमेंट करना, उसको, यही क्या है? असेसमेंट है ना. और यही हम जानते हैं, हम बच्चों को असेस करते हैं by different types of questions, right? By the project method, by the test, by examination. Okay, and then we document it so that we can check the progress कि भाई हमने जो पढ़ाया है वो कोई नॉलेज बच्चे ने गेन किया है या नहीं किया है. ओके, अगर नहीं किया है देन इट्स अ फीडबैक फॉर बोथ. ये फीडबैक है दोनों के लिए. ओके, किया है तो भी फीडबैक है, नहीं किया है तो भी फीडबैक है. अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, दैट गिव्स यू फीडबैक दैट यस, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड, है ना. सो एज ए टीचर यू गेट द फीडबैक कि यस, आपकी टीचिंग मेथड्स अच्छी हैं, योर टीचिंग स्ट्रेटजीज आर गुड, जो आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं क्लास में, दे आर गेटिंग इट. और अगर उनके स्कोर्स अच्छे नहीं हैं, उनका असेसमेंट में आप उन्हें कहीं ठीक नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं टीचर को भी अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स में चेंज करने की ज़रूरत है. ओके, ऑन द अदर साइड स्टूडेंट इज़ गेटिंग फीडबैक. स्टूडेंट को भी ये फीडबैक मिल रहा है कि वो जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं है. जितना उन्हें फोकस देना चाहिए उतना वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं. सो असेसमेंट वर्क एज एक लाइन वहाँ पर आप लिखें, असेसमेंट
serves as feedback for both स्टूडेंट्स एंड टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही ये फीडबैक का काम करता है। कौन? असेसमेंट, राइट? इट मीन्स दैट असेसमेंट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल स्टूडेंट्स आर अचीविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट बाय यू। क्योंकि ये हमें पता है, टीचर जब भी क्लास में आता है एक ऑब्जेक्टिव लेकर के आता है कि यस आज मुझे क्लास में जाना है, सो ये टॉपिक्स मुझे पढ़ाने हैं और इस क्लास के बाद मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा। सो दैट इज़ योर लर्निंग, दैट इज़ योर टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड दैट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर स्टूडेंट्स। ओके, सो हाउ यू विल गेट द आइडिया कि भाई इन लोगों को ये समझ में आई है या नहीं बातें जो मैंने आज क्लास में पढ़ाई हैं। Obviously you have to assess, right? So that will give you feedback, that is giving you feedback। आपने कुछ questions पूछे उन topic से related, if students are able to answer them, that means they are getting your points। Okay, so you can write over there, just a second, yes, it, okay, yes, it helps in determining how well students are achieving the learning objectives set by the curriculum। Okay, so now we get the idea। Assessment is an integral part of the teaching learning process। It gives you feedback about your teaching strategies and learners understanding, and that means that you get the idea students are achieving those learning objectives or not। Now coming to some basic things, ये जो assessment word है actually में ये आया कहाँ से है? Okay, so right over there, assessment actually it's a Latin verb। Okay, it's a Latin word। Assessment means it's a Latin verb that is assedere। Okay, that means to sit beside, पास में बैठना। Now you must be thinking कि ये पास में बैठना असेसमेंट से, इस वर्ड से कैसे रिलेटेड हो सकता है। Now आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जब भी असेसमेंट होता है मतलब कि हमारा जब एग्ज़ाम होता है सो हम एक के पीछे एक अलग अलग डेस्क पर बच्चे बैठे होते हैं टू सिट बिसाइड, एंड जो है हमें एक पेपर दिया जाता है और हम वो सॉल्व करते हैं, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट। टू सिट बिसाइड इज फॉर टीचर, टीचर को पास में बैठना है, एंड असेसमेंट में साथी बनना है किसका? स्टूडेंट का। नाउ I'll request you to take a note of the next few lines, that is, let me write over there, it originally, it means to sit beside, originally implies that in assessment the teacher sits with students or learners, right? And assessment is something teachers
do with and for students, for students rather than to students, right? So it's a huge line, it's very important, it's actually the core of the assessment. ओके सो असेसमेंट ये क्यों किया जा रहा है? असेसमेंट में टीचर इन्वॉल्व है विद द स्टूडेंट्स, है ना? असेसमेंट किया जा रहा है, बच्चों के लिए किया जा रहा है, ना कि बच्चों का किया जा रहा है. Getting my point? So what they have not learned, what they have not understand is not totally their fault, right? It may be teachers' fault that those teaching strategies are not applicable or not suitable for a particular or a group of student, right? So असेसमेंट में टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी इक्वल रहना चाहिए. ये बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए है, ना कि बच्चों के लिए है. अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना? हम बच्चों को असेस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को किसी एक टॉपिक को लेकर के वो असेसमेंट किया जा रहा है दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स. ओके, नाउ coming to the next point, I want to add one more definition here, so please write. It is the process of gathering, and discussing information from multiple and diverse sources to develop a deep understanding of what students know, understand and can do with their knowledge. Now it's a very important thing. So assessment में हम क्या करते हैं? We gather and discuss information. बच्चे को क्या आता है, right? What student know, उसे क्या पता है, वो क्या समझता है, और उस नॉलेज का वो किस तरह से यूज कर सकता है इन देयर प्रैक्टिकल रियल लाइफ. ओके, दैट अबाउट दैट वी गैदर इंफॉर्मेशन इन तीन एस्पेक्ट के लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. ओके, सो दैट हम ये समझ पाएँ कि किसी भी टॉपिक को लेकर के बच्चे की जो समझ है वो किस लेवल तक की, क्या सिर्फ वो उसे जानता है, क्या वो उस चीज़ को समझता है, क्या वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है. ये सारी चीज़ें आपको असेसमेंट से ही पता चलेंगी. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Next heading is going to be the nature of assessment. Okay, nature of assessment. Okay, right. So please take a note of this. Assessment, then I will explain you. Assessment is an integral part of teaching learning process, right? Helping educators understand the effectiveness
understand the effectiveness of their instruction and students progress in a course or subject. So nature क्या है? Assessment का nature क्या है? It's an integral part. It help educator and student both. Educator को ये feedback देता है that how effective is your teaching methods, your instructional methods, okay? And student को उसकी progress के बारे में बताता है. So in this there are four fundamental elements. There are four fundamental elements. Four fundamental elements of learner centered assessment, है ना. लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट मतलब कि जिसमें लर्नर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है. ओके इस तरह के असेसमेंट का वैसे बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ असेसमेंट लर्नर सेंटर्ड ही हैं. सो उसके फोर फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं. सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय मेकिंग वी कैन से चार्ट. ओके सो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आप असेसमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको सबसे पहले तो कुछ पढ़ाना होगा. पढ़ाने से पहले आपको क्या करना होगा, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि भाई हमें बच्चों को ये पढ़ाना है. देन यू टीच, ओके, देन यू असेस, राइट. सो फंडामेंटली फर्स्ट थिंग formulate statements of intended learning outcomes. पहले आप स्टेटमेंट्स बनाएं कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं. ओके फर्स्ट थिंग, ओके let me take this on the next page because it will take more space. So formulating statements of intended learning outcomes. सबसे पहले आपको स्टेटमेंट तैयार करना है कि बच्चे क्या सीख पाएंगे इस क्लास के बाद. सो फर्स्ट यू हैव प्रिपेयर दैट, देन you have to develop the assessment measure. क्या क्या आप असेस करेंगे. सो develop और select assessment measures. Okay, that is the second thing you have to do, and it's interchanging actually. सो जो आपके मेजर्स हैं कि आप क्या असेस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट बना सकते हैं या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने असेसमेंट मेजर्स बना सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट you have to create assessment, not the assessment, you have to create experience. Right, experience leading to outcomes. मतलब कि आपको कोई एक्टिविटी या जो कुछ भी आप क्लास में करने वाले हैं दैट विल क्रिएट एक्सपीरियंस, राइट, टू फॉर दैट आउटकम्स जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके लिए आपने जो स्टेटमेंट बनाए हैं कि भाई बच्चे आज ये चीज़ें समझ जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने होंगे. मान लीजिए आप क्लास में किसी चीज़ का कोई मॉडल दिखाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, या आप लेक्चर देंगे, या आप डिस्कशन कराएंगे. सो यू हैव टू क्रिएट एक्सपीरियंस. ओके, देन फोर्थ एलिमेंट डिस्कस the use
assessment result to improve learning. Okay, now after doing this, आपने एक्सपीरियंस क्रिएट करा लीडिंग टू दैट आउटकम्स, एंड देन जो उससे रिजल्ट आएंगे उन्हें आपको डिस्कस करना है. आफ्टर द डिस्कशन यू विल गेट द आइडिया हाउ यू कैन इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ योर स्टूडेंट्स. ओके, सो उसमें ये भी रिजल्ट निकल कर के आ सकते हैं दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर टीचिंग मेथड, यू हैव टू change the lesson plan. It may happen that students are not having that prior knowledge about that concept, their understanding is not well developed, so you have to adjust your teaching method according to the requirement of the learner, right? And the requirement of the learner will reflect in the assessment, right? So these are the four we can say 4 elements of assessment. Now moving to the next, that is summary of nature of assessment. So अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा that is all about assessment and its nature. अगर हमें कुछ points में इसे summarize करना हो, so what it could be, right? So let's make a note of this. So summary point, summary of nature of assessment. Okay. Yes, so please take a note. Assessment involves students and teachers in continuous monitoring of students learning. So assessment जो होता है वो स्टूडेंट और टीचर दोनों को इन्वॉल्व करता है. किसकी मॉनिटरिंग में? स्टूडेंट की लर्निंग की मॉनिटरिंग में, राइट? एंड देन नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इज it gives students a measure of their progress as learner, right? Third one, it provides an opportunity for close observation of students in process of learning. बहुत करीब से आप उनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बढ़ रही है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. ओके, इट गिव्स फ्रीक्वेंट फीडबैक. इट गिव्स frequent feedback. Okay, now feedback to both, feedback for teacher and learner, right? Fifth one, it has profound impact on the self-esteem of learner, right? And the last one, sixth one, that is
uses a variety of strategies. Okay, so no doubt in the upcoming session we are going to extend, and I'm going to explain all these points in the upcoming sessions. In the upcoming session we will complete types of assessment. Then we have to study about the feedback, about the portfolio, all the assessment tools we are going to study in these sessions, right? So thank you so much all of you for joining in this session. I hope this session will help you in your upcoming examination. Thank you so much. Bye bye. Take care.